Hello there, and welcome to Uncut with Gina and Sukdev. Very, very pleased today to have a special guest from India and also his manager and translator. So, welcome, Vinod Rana. Very pleased to have you on Thank you, ma'am. and thank you, Thank you, ma'am. thank you, Suraj, for coming and helping us out because I'm sure it's going to be really helpful to have you here. Before we get started, um, Sukdev, do you want to just explain to people about your business and who you are? Yes, so I'm the founder of Creative Discovery Group. We're a team of coaches and consultants across 12 countries, and we're on a mission to impact 1 million plus people in a positive way. And I'm so excited to have you two here today, and can't wait to get started. Thank you. And I'm Gina Gardner. My company, Genuinely You, is all about empowerment and enlightened leadership, helping you step into being the best version of you. But it's not about us, it's about our guest. So let me read you his bio. Vinod Rana was born in 1986 in the famous pilgrimage site of Satmarlevat. The story of Mahavir's Vinod Rana's struggle is as interesting and inspiring as the heroic story of a warrior on the battlefield. It's been described by legend screenwriter Lokesh Sharma in a book titled Rana, a real story of a world champion. Now, Vinod had a big dream of wrestling from childhood. He's achieved special skills in martial arts as well as wrestling on many levels. He's been a two-time world champion. He graduated from Chowdhury Charan Singh University, Meerut, and after this he obtained a master's degree from here. So not just a great sportsman, but a very clever man as well. His many sporting achievements include several disciplines: boxing, kickboxing, wrestling, and more. So here are just a few of his achievements in the sporting arena. A silver medal in Taekwondo in 2010, gold medal in kickboxing in Delhi in 2010. At the Great Khali Stadium in 2016, he won the World Wrestling Entertainment Belt. In 2017, he won the gold medal in the 74 kilogram National Open Wrestling. Gold medal in the Professional Mixed Martial Arts or MMA World Championships in 2018, and the title of MMA World Championship medal, and then gold medal at the Asian Jiu-Jitsu in 2019. In this way, Vinod Rana has come out of extreme poverty and has twice served as world champion in martial arts. What an amazing story, and we're going to find out more. So I'm going to hand over to Sukdev, and he's going to start the ball rolling. So welcome all of you. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much for being here. So Vinod, if you can start sharing a little bit of your story for the audience. I know you're doing some amazing things in India, and you have some really big goals. But if you can go back and start in the beginning, where this all started for you, and some of your struggles, and if you can get into a little bit of that story to just get us started. ये पूछ रहे हैं कि इतना सब आपने कर लिया है, आपने बहुत सारा कुछ अचीव किया है, बट उसके पहले आपने क्या क्या स्ट्रगल देखी है, आपकी जो पूरी स्टोरी कहाँ से चालू हुई है, वो ये पूछ रहे हैं. मेरे पिताजी एक लोअर फॉर्मर थे, और जो मेरी फैमिली है एक लोअर फैमिली से बिलोंग करती है, और इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि जिसे हर एक खिलाड़ी के लिए हर चीज़ उपलब्ध हो जाए समय पर. मेरे पिताजी छोटे से किसान के साथ साथ एक मजदूर भी रह चुके हैं, और उन्होंने अपने जितने सारे उनके बच्चे थे उनके लिए काफ़ी संघर्ष किया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा मेरा नाम रोशन करे, मेरा घर का नाम रोशन करे, और काबिल इंसान बने. और लेकिन मेरा जो
इंटरेस्ट था शुरू से ही, स्पोर्ट्स में था। तो स्पोर्ट्स को देखते हुए पिताजी ने बहुत संघर्ष झेला, क्योंकि गांव गांव देहात में वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है कि हर समय पर हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स में ज़्यादातर इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में वो सेवाएं नहीं है कि हम एक अच्छे कोच को लेकर अच्छी ट्रेनिंग ले पाएँ। और मैंने नेशनल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, प्राइवेट जॉब भी की है और मजदूरी भी की है। और पिताजी ने सड़कों पर काम करके और इसके साथ साथ पढ़ाई भी की है, मैंने एमकॉम किया है, एमबीए किया है। तो बहुत संघर्ष रहा है। तो बस So his story begins with his father. His father was a farmer and a laborer, and it was quite tough for their family to get that daily bread because they were touching that poverty line. And yeah, so on the daily wages that which they got, his father had to feed the whole family. And so his father saw the potential he can be a good sportsman. Even he showed interest in sports from quite an early age, and it's also because of the fact that the local so okay locally wrestling is quite famous in villages, and that is where he grasped the interest of wrestling. So what his father saw that and used to make him run in the field to make him do labor work so that he can increase his skills, his strength, uh, and and he also says that in the villages we don't have the necessary equipments or the necessary resources for one to train, for one to practice their skills. Even today, we don't have good coaches in his area. It's really tough to find the equipment or the resources. And yes, but he has seen some hardships. He had to go through a lot. He has worked as a farmer and a laborer, and he practiced in the farms or whatever formally things available to him. And so he started playing in the district level. Then he went on to state, nationals, and now international. This is his story. Excellent. Wow. So how did it go from not having the equipment to train? What were some of the steps that were taken to go international? Can you repeat? There was a glitch, I guess. Can you share some of the steps that he took from like not even having the equipment to train, maybe some of the process that he went through, and to get to go international in martial arts and wrestling and तो ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई भी सामग्री नहीं थी, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या कुछ था नहीं, ट्रेनिंग या कोच वैसा, तो आपने उसके बावजूद भी आपने ऐसा क्या किया जिससे आप आज इंटरनेशनल एथलीट? सबसे पहले कि किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी पर्सन को, किसी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या अपने लक्ष्य तक जाने के लिए सबसे पहले होती है मेहनत। मेहनत मेहनत ऐसी जिसमें ईमानदारी हो और जो कंटिन्यू हो। ऐसा नहीं है कि आज हमने कर लिया, 2 दिन के लिए छोड़ दिया। कुछ भी करना होता है तो रोज़ करो। अगर किसी बड़े लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो भी हमारी कमी है अंदर, उनको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक गाँव से बिलॉन्ग
करता हूँ। तो मैंने खेतों में काम करके अपने आप को ट्रेन किया और पिताजी के थ्रू रनिंग और खेतों में काम करके, यानी कि फावड़ा चला के या जो भी ग्रामीण में सेवाएँ होती हैं, उनके थ्रू सब। और मेन मेन बात ये है कि अगर आप खुद को अच्छी तरह ट्रेन करना चाहते हो तो कंटिन्यू मेहनत और लगातार ईमानदारी से ट्रेनिंग करते रहना करना पड़ेगा। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो रेसलिंग का ही है, और रेसलिंग की वजह से मैंने हर जगह और हर फील्ड में विजय हासिल की है। उसका कारण यह था कि लगातार मेहनत और जो बैकग्राउंड था वो रेसलिंग था, जिससे मुझे ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं आई, जिससे मैं अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर सकूँ। So he says that so of course we did not have any equipment or resources, but wrestling is such a sport that you don't need a lot of equipment because we practice in mud. So he started from there, and talking about increasing our strength or stamina, he used to run. He used to work on fields. He used to use racks. Um, um, and so he started with wrestling. He went on to national level. He got some attention of the local politicians, and they provided a few equipments. And then with the continuous development, we had a few gym in the area, not the exact area, but at a quite few distance. Yeah. And so, as I said, we still do not have a lot of resources at his place. Uh, there is no proper stadium or anything as such. But we are still managing. We are just giving our full our best. And he also says that he hasn't taken a day off since 2010. Day off as in practice. So suppose we don't have anything, but what we can have is the daily practice, and that is what he has done. Consistency is the key to success. Wow, that's amazing. This. That's really good. So what sort of advice would Vinod have for people who are looking to create their ultimate version of themselves and chase their dreams? You know, not taking We, 2010. That's amazing. can you repeat? I think there's some glitch again. Sorry. Oh yeah. So not taking a day off since 2010. You know, that's over 10 years, going on to 11 years. What advice would Vinod have for people who are looking to create the ultimate version of themselves? तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको किसी को एडवाइस देना होगा कि आपके जैसा बने, तो आप ऐसा क्या एडवाइस देंगे? आपके जैसा बन सके आप? मेरा जो एडवाइस है इतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन एक एक एडवाइस ज़रूर है। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहनशीलता और प्रतीक्षा करने की अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, तो हम जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, यह सोचती है कि हमारा जो लक्ष्य है, कम मेहनत में बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बड़ा लक्ष्य है, तो आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। So he says that there are three things which he would like to say. The first thing is that the aim should be good. The aim should be big. You should know the potential that you have. The second thing is that once you have established your aim, the next thing should be hard work. Mhm. You have to put
all you have for the aim, you have what hard work has to go in. And the third thing he says is that patience. Nothing comes in easy. Nothing comes fast. Uh, so like he said, my generation expect that we get results faster, we get results quick, but it's not always the case. You have to put in patience, time, effort, everything, so that the fruit is achieved. It's very true. There's a famous golfer who once said, it's amazing, the more I practice, the luckier I get. And I think there's a lot in that. Can I ask, what are the attributes? What are what sort of person do you need to be successful at this level? तो ये पूछ रहा है कि सक्सेसफुल बनने के लिए आप जैसे अचीव आपने जो कुछ अचीव किया है, ऐसा कुछ करने के लिए आपको एक कैसा इंसान बनना पड़ता है? आपका व्यवहार कैसा रहना चाहिए? आपकी परिस्थिति, आपकी मेंटालिटी कैसे रहनी चाहिए? आप किस तरह के इंसान रहना चाहिए वैसा? किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे स्पोर्ट्स का हो या अदर कुछ भी हो सकता है, अदर मोड, तो सबसे पहले आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद पर ध्यान देना पड़ेगा कि उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, और उसमें क्या-क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए, उसको भी ध्यान में रखकर हमें सोचना चाहिए। और सबसे पहले हमें किसी भी काम को या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे, तो हम ना तो एक परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन जिन उन कठिनाइयों को जो पार कर जाते हैं, वही सफल होते हैं। क्योंकि एक बड़ा इंसान या एक अच्छा इंसान बनने के लिए कठिनाइयाँ आती हैं, हमें उनको नज़रअंदाज करना है और अपनी मेहनत पर अटल रहना है, और लगातार ईमानदारी से और कंटिन्यू मेहनत करनी है, क्योंकि विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता है। विदाउट मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है, कोई ऐसी बड़ी सफलता ऐसी नहीं मिलती। उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी मेहनत होती है, जब जाकर कोई एक बड़ा इतिहास लिख पाता है। एक इतिहास एक दिन में नहीं लिखा जाता, एक इतिहास बनाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, और मुझे तो कम से कम 20 वर्ष हो चुके हैं, और 20 वर्ष प्लस हो चुके हैं, तो जब जाकर ये सफलता मिली है। दैट्स इट। So he says that the attribute a person should have for one to become successful doesn't matter the industry, it can be sports or anything else. He says that the person should be honest with himself, and the second point is self-actualization. So these two things go hand in hand. You, if you know you have done something today, it's wrong on your part. You shouldn't blame it on others. You should know that it's your mistake, or it's up to you to take care of it. And the point about self-actualization is that you should know your capabilities, and you should always aim for that. You should know your abilities as well, and you should work on that. It takes time. It took him 20 years, Yeah. so it takes time. It takes hard work. It takes patience. I absolutely agree with what you say. One of the things that I think I've learned over the years is that many people, initially it requires someone else to believe in your potential before you do. That somebody notices that you have an ability and encourages you,
How important has that been in his development? तो ये पूछ रहे कि अ, आप खुद को एकदम आपको खुद को मालूम करने से पहले आपको किसने ऐसा सपोर्ट किया? आपको ऐसा किसने बताया कि आप में ये काबिलियत है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो? क्योंकि मैं बचपन से ही एक मेहनती रहा हूँ, ईमानदार रहा हूँ। मेरे अंदर से खुद से ही आवाज़ आती थी कि तू ये कर सकता है। और बचपन से ही रेसलिंग में था तो ज़्यादा कुछ कठिनाइयाँ आई नहीं, और एक आदत सी पड़ गई है एक मेहनत करने की। क्योंकि जैसे खाना ज़रूरी होता है, उसी कारण मेरे शरीर को एक एक्सरसाइज की आदत पड़ गई है। क्योंकि जब तक मैं वो नहीं करता तो शरीर को पूरी डाइट नहीं मिल पाती है। क्योंकि पिताजी भी एक हमारे बहुत सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्हीं की सारी मेहनत है, उन्हीं की सारी तपस्या है, जो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि उन्हीं से मुझे इंस्पायरेशन मिलता है, उन्हीं से मुझे एक आत्मबल मिलता है कि एक एक मेरे पिताजी नॉर्मल होकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मेहनत कर सकता। तो उन्हीं उन्हीं को देखकर मुझे एक आत्मबल मिला है, और जिसके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, और ये सब मैंने लक्ष्य प्राप्त किया है। दैट्स इट। So he says that it's his dad who saw it that he has great potential. Uh, so his so he has two brothers, and both of them have been kind of a disappointment to the family because of different reasons. But his father has always seen him as someone who has a lot of potential, who has a lot of promise, and that is also the reason why his father made him do so much of hard work. Mhm. And so it everything goes to his father, and he says that uh, he has seen his father through all the tough times, all the rough times. He has been there with him, and that is the reason why he gives his best every day in training in terms of everything. Great, thank you very much. Sukdev, have you got another question? Um, yeah, I'm just trying to like not taking a day off. That really, for almost 11 years now. How do you keep balance from with work and your personal life and other areas of life? तो ये पूछ रहे हैं कि आपने 2010 से ट्रेनिंग में बिल्कुल भी कुछ कम नहीं किया है, कुछ भी छुट्टी नहीं ली है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका जो वर्क लाइफ है, जो आपका पर्सनल लाइफ है, वो आप ऐसा बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, और घर से छूट मिली हुई है कि तुझे स्पोर्ट्स ही करना है। तो उसको देखते हुए मैं कहीं पर शादी या कुछ जल्दी से अरेंज नहीं कर पाता हूँ, जा नहीं पाता हूँ। क्योंकि सारा ध्यान, सारी मेहनत इसी पे लगी रहती है, और पिताजी और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, और जिसके कारण मैं कहीं इधर उधर जा नहीं पाता हूँ। और बैलेंस पेरेंट्स से, क्योंकि माता पिता ने सपोर्ट किया तो बैलेंस ऐसे ही बना रहा। क्योंकि माता पिता के पेरेंट्स के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं रहा है। तो यही थी बस। ये पूछ रहे हैं कि आपकी शादी भी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? आप दिन में कितने बार वर्कआउट करते हो? कितने घंटे का वर्कआउट करते हो? हाँ, मैं अभी 4 घंटे करता हूँ नॉर्मल, और वाइफ का भी सपोर्ट है, और 2 बच्चे हैं। तो बच्चों को भी कभी कभी ट्रेन करता रहता हूँ। बच अ, बस
So he says that he actually doesn't manage his life and personal life. He is completely dedicated to his sport. He works out around 4 to 5 hours daily, Yeah. and so initially his mom dad never said anything. They were always that you do your sport, you don't mind. And after getting married, his wife is quite understandable that his wife is very considerate of him, of the sport, and she gives her support in the best way she can. And in terms of taking care of the kids, he trains them in boxing. Uh, he trains his kids, so that family time goes into training as well. Right. So, no, it's all mixed. He says that he doesn't attend a lot of social events. Even if he does, he goes there for half an hour, and then leaves. And it's because after so much of training, he needs rest. He needs his family time, and that is why he doesn't attend social events. But apart from that, it's quite chilled with his family. It's all good with them. That's great. It shows great dedication, and that's why he's so successful. Why you're so successful. Um, I see lots of different martial arts and sports. What's the favorite? Is there a favorite? तो ये पूछ रहे कि आपने बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट खेला है, बॉक्सिंग है, wrestling है, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट तो पहले नंबर पे स्पोर्ट्स में रेसलिंग है और दूसरे में वुशु है, जिसमें पंच भी चलता है और किक भी चलती है और थ्रो भी चलता है, जो रेसलिंग में यूज करते हैं। अच्छा, किक बॉक्सिंग और वुशु, मतलब तो आपका किक बॉक्सिंग फेवरेट क्यों नहीं है? क्योंकि वुशु और किक बॉक्सिंग तो एकदम सेम ही है, आई गेस। आप वुशु में थ्रो भी चलता है, थ्रो को हटा दोगे तो किक बॉक्सिंग हो जाएगा। Okay. So he says that his favorite is wrestling Right. because he has been practicing it since childhood. If it's not wrestling, then it's wushu, even that is a type of martial arts where you can throw punches, kicks, and you can use throws as well. You can throw the human. So if it's not wrestling, then it's wushu. Okay. I'm interested in there's there's an amount of time that you can remain a top class athlete because of aging. So you've got to have other plans in terms of when your practical sporting career comes to an end. So what's the plan? तो ये पूछ रहे हैं कि एक एक एथलीट की भी एक उम्र होती है कि आप एक टॉप पे रहो, उसके बाद जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो आप डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब आप ऐसा डिक्रीज हो जाएगी अच्छे से आपकी उम्र के साथ, आपकी जो भी एथलेटिज्म है, तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? उसके बाद जो मैंने किया है, मैं भी दूसरों को सिखा सकूं और मैं सोचता हूं कि मेरे जैसा भी कोई एक या बहुत सारे खिलाड़ी बने और जिससे अ, देश का नाम हो और जितने भी बच्चे हैं मोटिवेशनल हो और बच्चे मेहनत करें और जितना भी ज्ञान है मैं दूसरों को दे सकूं और जो जो मैंने दर्द सहा है, जो मैंने तकलीफ़ें झेली हैं, वो दूसरा बच्चा ना झेले, जिससे उनको अच्छा कोच ना मिले और कोच ना मिलने के कारण वो रास्ता ना भटकें और अपने लक्ष्य को तक ना पहुँचें। और लास्ट समय में ये रहेगा कि एक एज ए ट्रेनर के रूप में काम कर सकूं। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि आप अपना खुद का जिम खोलेंगे या ऐसा स्टेडियम खोलेंगे जहाँ पे आप ऐसा प्रैक्टिस वो तो करा सकें? बायोपिक के बाद ही खोलूंगा। So he says that he isn't going for something which is quite profitable. He wants, so he's quite away from money. He doesn't want. Sorry, can you repeat that last bit? I missed that. So he says that he doesn't want anything related to money. He's quite away from money things. He just want that what he saw in his childhood, what uh, struggles he has been through. He doesn't want other children to do that. He wants to give
the people that he didn't have in terms of a good coach or resources and stuff. He just aims to be, he just aims to train children Yeah. since the grassroots. That's the crucial time period for an athlete. So to And play it forward. that's the only aim he has after his athleticism. It's a great thing to do. Thank you. Sukhdev, any questions? Yeah, so right now with all the training and everything that's that you're doing, Vinod, what is your ultimate goal? तो ये पूछ रहे कि आप जो ये सब कर रहे हो आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपका अभी ओलंपिक्स में नहीं है एशियन गेम्स में है तो आप क्या यूएफसी करना चाहेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे आपका अल्टीमेट गोल क्या है ऐसा कि आपको ये चाहिए मेरा अल्टीमेट तो है यूएफसी का, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं यूएफसी में जाने का। और एशियन गेम में तो ये गेम आ चुका है, तो अभी मेरा लक्ष्य है एशियन गेम में गोल्ड जीतने का। अगर बाय चांस ओलंपिक में आ जाता है तो मैं चाहूँगा कि ओलंपिक में भी मेरा गोल्ड आए। तो एशियन गेम्स के और बाद आपका यूएफसी रहेगा है ना एशियन या तक एशियन गेम्स में होगा उसके बाद यूएफसी में वो लोग देते हैं वैसे यूएफसी के लिए मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, यूएफसी के लिए अभी भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ, ट्राई कर रहा हूँ, मेरे कुछ संपर्क में है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ। So he says that his ultimate goal is to play in UFC. His age is almost 33 now. So There and, sorry, could you repeat that? We lost the. okay, just a minute. So he says that he wants to play in the UFC, but before that he wants to get a gold for India in Asian Games. Right. But if Jiu-Jitsu is added in the Olympics game, this Olympics game, then his ultimate goal is that get that gold medal. Excellent. So as we're coming towards the end of the show, can you ask, this is an opportunity for him to let the world know what he wants the world to know. Are there questions that we haven't asked that he would like an opportunity to say? तो ये पूछ रही है कि अभी ये जो पूरा हमारा इंटरव्यू है ये सब यूट्यूब में जाएगा ये सब जगह जाएगा पूरी दुनिया देखेगी आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमें आपसे कुछ पूछना चाहिए कि ऐसा हमने अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं है ऐसा कुछ लगता है कि हमें पूछना चाहिए हाँ, बाइक के बारे में बता दो। हाँ वो तो मैंने बताया है so there's nothing that we want to ask it's just that we would like to say that we have an author who has written a biopic about Vinod Rana and we are soon planning to produce a movie on that. Brilliant. Let's see. We have good hopes for that. Yes. So how can people get hold of Manoj? How, if people wanted to find out more or to make contact, where would they find you? So we have a website that's www.mahavirvinodrana.com and if that suppose goes down or there's some server work, then LinkedIn is always there and all. And even if you can't find that, you can find me on Instagram. That is Brighter Star. Find me there. Yes. And we'll make sure all of those details are in the show notes. So it just remains for us to say a huge thank you. We recognise it's very late at night where you are, and there've been a few technical difficulties because of language. You've been a huge help. Thank you very much for translating. And thank you, huge thank you for joining us today, and the very best of luck in everything you do. Look forward to seeing you in the Olympic Games and in the World Championships. But thank you. Thank you very much indeed. Bye-bye now. And thank you for joining us. This is the last in our series, so we look forward to seeing you in series 3 of Uncut with Gina and Sukhdev.
Take care. Be safe. Bye bye now. Bye.